Assalamu alaikum. I'm Atika Asad, and today I'm going to present the topic of Introduction to John Milton and his Paradise Lost. So, firstly, I will introduce to John Milton. He was born in 1608 in Bread Street, London, and he died on 1674 in London at the age of 65 years. And he is also known as the blind poet because in the last years of his life, he gradually became blind, and he became completely blind at the age of 43 years. And as he got blind, so at the end of his writing career, he got help from a famous poet, Andrew Marvell. Andrew Marvell को हम जानते हैं, he is a poet जिनकी famous poem है To his Coy Mistress. तो क्योंकि अब यहाँ से पता चलता है कि वो उनके contemporary भी हैं, उनके friend भी हैं. And he's a famous poet of Puritan age, such that he can be called the representative of Puritan age. Puritans, because Puritans were deeply religious, and his magnum opus is based on religious theme. तो magnum opus मतलब एक famous तरीन चीज को कहते हैं. तो इनकी जो magnum opus है वो Paradise Lost है undoubtedly, और वो एक purely religious theme पर ही base करती है. On the other side, that is also having some allegorical aspects, लेकिन basically जो उसकी main theme जाता है वो religious theme है, और वो फिर purely Puritan themes को भी follow करती है, because Puritan age के अंदर जो dominant trends थे वो religious poetry के ही थे. और एक और point है इनका, that due to long hair he was called Lady of Christ College. और ये बात ना जॉन ऑब्रे अपने वर्क ब्रीफ लाइव्स में मेंशन करते हैं. एंड इनके बारे में एक ये पॉइंट भी है कि इंग्लिश पोइट्स के अंदर लाइक मॉडर्न एज में तो जाहिर है एक एजुकेशन का जो सिलसिला था वो एडवांसमेंट की तरफ आ गया, तो सभी पढ़ते थे, लेकिन जो बिफोर एट दैट टाइम ड्यूरिंग दैट रेनेसांस एंड जैकोबिन एंड कैरोलिन एंड प्यूरिटन एज, उस एरा में he was the most literate and most highly educated poet, and he knew 4 languages and he had command on them. He knew English, Latin, Greek and Spanish languages. And Latin में से उन्होंने बहुत सी words को अपने works में use भी किया है. Next, going towards Milton's views on politics. I'm audible? Yes, you are audible. Change Okay. your slide. Okay. Slide change हो गई? Yes. Milton's view on politics कि वो हम पहले सर के लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि वो ओलिवर क्रॉमवेल को सपोर्ट कर रहे थे, उनके लेडन सेक्रेटरी रह चुके थे. लेकिन एक और चीज भी है, that although Milton lived during the reign of 3 monarchs that are James I, Charles I and Charles II. जेम्स I में ज़ाहिर है उनके वर्क्स थोड़े बहुत स्टार्ट हो गए थे, लेकिन प्रॉपर जो उनकी एक रेन गुजरती है वो चार्ल्स I के अंदर गुजरती है. उनकी जो हम अगर क्रोनोलॉजिकल वे में चेक करें तो वो 3 किंग्स का टेन्योर गुजारते हैं. और सिमिलर टू द वे जस्ट चौसर एक और पोएट हैं जो नॉर्मन एज में हमने देखा था, तो वो भी 3 मोनार्क्स के साथ उन्होंने काम किया. उन्होंने एडवर्ड III, रिचर्ड II एंड हेनरी IV के साथ किया, और ये जेम्स I का बहुत एंड में, लेकिन मोस्टली इनका जो वर्क है वो कैरोलिन एज में और फिर चार्ल्स II के एज में भी है. नेक्स्ट, ही वांटेड रिपब्लिक इंग्लैंड एंड एंटी मोनार्की, so he supported Oliver Cromwell, who brought Commonwealth era for 11 years, and that is 1649. क्योंकि जो चार्ल्स I की एक्जीक्यूशन है वो 1649 की है, और जो रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की है वो 1660 की है. और नेक्स्ट, ये जो एक इवेंट है, यानी कि उनका जो एरा है ये जिसमें मिल्टन वर्क कर रहे हैं, वो प्रोसीड करता है इंग्लिश सिविल वॉर से, और आगे आ जाता है इसके स्टुअर्ट रिस्टोरेशन जिसमें चार्ल्स II वापस आते हैं फ्रांस से. सो मिल्टन वाज अगेंस्ट चार्ल्स I, thus he wrote a book titled Iconoclastes. It is Iconoclastes,
and that was published in October 1649. In this book, he provides a justification for the execution of Charles I, which had taken place on 30th January 1649. And the book's title is taken from Greek, that means iconoclast or breaker of the icon. तो यहाँ पर वो अपनी व्यूज को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो मोनार्की के ही अगेंस्ट हो गए थे, उनको रिपब्लिक इंग्लैंड चाहिए था. दैट्स व्हाई ही wholeheartedly supported Oliver Cromwell. And on the other side, in the praise of Cromwell, he wrote many defenses, as he was personal secretary and he was very close to him. और फिर आगे देखें तो 1658 में ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो जाती है. अब 1658 में उनकी डेथ हुई एंड विद इन 2 years मोनार्की रिस्टोर हो गई. चार्ल्स II वापस थ्रोन पर आ गए. So restoration of monarchy and Milton. 1660 is marked as the year of restoration of monarchy. So the reign of Charles II begins from here. Like Dryden, there were many other poets and writers who analyzed the situation and wrote in accordance with the prevailing political authority that they changed their views with the changing colors of England. But unlike them, Milton stayed confined to his previous thoughts. यहाँ पर आप एक और पॉइंट है कि इनकी नेचर का भी आइडिया होता है इससे, कि वो थोड़े जिद्दी मिजाज थे या फिर साबित स्टेडफास्ट थे. तो ये दोनों चीजें उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, कि वो जिद्दी भी थे और मतलब उनकी अनफ्लिंचिंग एम्स भी थे, कि उनके जो व्यूज थे वो चेंज नहीं होते थे. जो उनका एक रिपब्लिक इंग्लैंड का व्यू था और वो एक प्रोटेस्टेंट फेथ रखते थे, तो वो उसी में ही रहे, चाहे उनके लिए आसानियां रही चाहे उनके लिए परेशानियां रही, बट उनका जो व्यूज थे वो सेम रहे. लेकिन ड्राइडन एक वो भी बहुत ही डोमिनेंट पोएट हैं, रिस्टोरेशन एज में वो डोमिनेट करते हैं. उनकी एक ये मैंने पॉइंट देखा था ड्यूरिंग दिस रिसर्च, कि उन्होंने अपनी चार्ल्स I के साथ जब उन्होंने उस रेन में की पोएट्री तो उनके अकॉर्डिंग्स में की, फिर उसके बाद क्रोमवेल के वक्त उन्होंने इतना खास अपोज नहीं किया, उनकी भी प्रेज ही की, और उसके बाद चार्ल्स II की भी प्रेज की. तो वो एक टाइप का उनकी जो राइटिंग थी वो प्रोफेशनल वे में राइटिंग कर रहे थे. मूविंग टुवर्ड्स हिज फेमस वर्क्स, उन्होंने वो शेक्सपियर से काफी इन्फ्लुएंस थे, तो ऑन शेक्सपियर लिखा उन्होंने, और वो एक उनकी शॉर्ट वर्क है बहुत. एंड ही रोट हिज फर्स्ट एलेजिया प्राइमा ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड ड्यूरिंग प्लेग. तो यहाँ से एक उस एरा की बात चलती है कि एक तो बहुत मेजर बड़ा प्लेग आया था जो नॉर्मन एज में आया, इसको हम ब्लैक डेथ कहते हैं, लेकिन छोटे प्लेग्स डिफरेंट एजेस में आते रहते थे. तो ये एक प्लेग के दौरान उन्होंने उनके फ्रेंड की डेथ हुई तो एक एलेजी लिखी उन्होंने. उसके बाद उनकी एक फेमस वर्क है, ये भी एलेजी ही है एक तरह से, लिसिडस, that was published in Trinity manuscript, or it was written on the death of his friend Edward King, whom he met in Cambridge. तो वो इससे पता चलता है कि वो कैम्ब्रिज में पढ़े हैं और वहां पर उनके एक फ्रेंड बने एडवर्ड किंग, जिनकी डेथ हुई, तो उन्होंने एलेजी लिखी लिसिडस. और इसको ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब पब्लिश हुआ तो उन्होंने 3 वर्क्स को एक साथ पब्लिश किया. 2 और वर्क्स थे उनके, वो यहाँ मैं मेंशन नहीं कर सकी, that were Arcades, Comus and Lycidas. And 1644 में उन्होंने एक वर्क लिखा, प्रोज वर्क था उनका, एरोपेगेटिका, that was written as a reaction against the censorship. वो शाहाना का वर्क भी इस पर बेस करता था कि वो पब्लिकेशन के लिए वहाँ पर, क्योंकि वो काफ़ी हाईली रिलीजियस पीपल थे ना ड्यूरिंग प्यूरिटन एज, तो उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी पब्लिश होगा वो एक दफ़ा चेक किया जाएगा, उसको अप्रूव किया जाएगा, तब वो पब्लिश किया जाएगा. And in 1667 he wrote his famous poem, that is his masterpiece, and that was Paradise Lost. And next it was followed by Paradise Regained and the Samson Agonistes. So Paradise Regained और Samson Agonistes, इन दोनों को उन्होंने एक साथ ही पब्लिश करा था सेम शेयर में.
अब यहाँ पर एक और पॉइंट भी है कि उनकी, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट रहे हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, एंड ड्यू टू दैट रीजन ही वाज नॉट हैविंग सच टाइम कि वो एक ग्रैंड एपिक लिख सकें, बट एज ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन लैटिन एंड एंटीक स्टडीज, तो उनकी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि वो एक ग्रैंड एपिक लिखेंगे. ही थॉट दैट ही हैड द पोटेंशियल टू राइट सच अ ग्रैंड एपिक. और फिर उनको चार्ल्स डू के के रेन में जब उनको इम्प्रिजनमेंट फेस करनी पड़ती है, ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने एक इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सोचा था, और उसके बाद जब वो फ्री हुए तो वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थे, और उन्होंने एंड्रयू मार्वल की असिस्टेंट से ये फिर लिखा था. देन पैराडाइज लॉस्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते हैं. John Milton was a radiant Protestant Christian and he was strictly against Catholicism. Or his famous poem Paradise Lost has a purely religious theme, and the purpose of writing it is to justify the ways of God to men. And it is a magnum opus of Milton, and it clearly goes in accordance with the Puritan themes that are didactic and religious. So didactic are those themes that guide us. The style of Paradise Lost. Paradise Lost is written in blank verse. That means it has rise and fall, and it holds up iambic pentameter, and it is an epic poem that has lofty, grand, and versatile style of Milton, and that grand style is coupled with elegant verbosity, and that's why the grand style of its vocabulary makes it rank among the great epics. और इसकी जो स्टाइल की बात करते हुए एक और पॉइंट है कि जैसे ग्रैंड एपिक्स में एक होता है कि they begin with a way in which there is conventional epic style में invocation की जाती है म्यूज को, यानी म्यूज को वो एक तरह से एड्रेस कर रहे होते हैं, और जहाँ पर जो म्यूज हैं वो यूरेनिया है. अब इसके साथ एक और क्रॉस रेफरेंस मुझे याद आ गया कि इन्वोकेशन करना होता है म्यूज को इन एपिक्स, तो ये स्टाइल आगे मॉक एपिक एक आएगी, रेप ऑफ द लॉस्ट, वो रेप ऑफ द लॉक, उसके अंदर भी ये वाला थीम, ये वाला स्टाइल ही फॉलो किया जाता है कि म्यूज को इन्वोकेशन की जा रही होती है. एंड द डिटेल्स, इट वाज रिटन आफ्टर इम्प्रिजमेंट, और इसका फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ, उसमें 10 बुक्स थी. उसके बाद एक और वॉल्यूम पब्लिश हुआ, दैट वाज अ फाइनल वॉल्यूम that was published in 1674, and that was having 12 books. So he was a great admirer of Greek and Roman literature, जो antique literature है. और होमर की जो एपिक्स थी उनकी एक स्पेशलिटी थी कि वो 24 बुक्स में पब्लिश की जाती थी. तो इसने कहा कि जॉन मिल्टन ये खुद फील करते थे, और उन्हें ये डिपिक्ट करने के लिए परहैप्स ये 12 बुक्स में किया, अपनी पैराडाइज लॉस्ट ग्रैंड एपिक को 12 बुक में पब्लिश कराया कि हम in order to demonstrate that my work is half of his weight. And it is written in third person omniscient, and it was based on the initial chapters of the book of Genesis. And the poem begins with the scene of hell, showing Satan and other devils living in pandemonium. तो पेंडेमोनियम एक वर्ड है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है. And they are planning to corrupt the earth and God's mortal creation. और उसके कैरेक्टर्स हैं, that the main one is Satan. तो Satan को काफी heroic qualities assign की जाती हैं. if हम अगर पॉइंट हो कि हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कौन है, तो on the basis of the 7 speeches, grand speeches of Satan, और जो heroic qualities उसको असाइन की गई हैं, तो he can be called the hero of Paradise Lost. और ये चीज़ हम एक तरह से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हम अगर रिलीजियस एस्पेक्ट में सोचते हैं तो हमें वो Satan हीरो नहीं लगता. बट अगर इस स्पेसिफिकली इस वर्क के अकॉर्डिंग्स में देखें तो Satan की जो डिपिक्शन की गई है उसमें उसको जो एक बोल्ड एंड बहुत इन्फ्लुएंशियल तो दिखाया गया, तो वहां पर Satan हीरो हो सकता है. नेक्स्ट, गॉड द फादर एंड गॉड द सन, क्योंकि क्रिश्चियन रिलीजन में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है,
and third one is Mary. So 3 gods ka concept hai. And another character is Adam, Eve, and sin and death. तो sin and death का एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर कि sin ऑलरेडी था और sin डॉटर थी सैटन की, और with their intimacy इनका जो एक बच्चा हुआ, that death was the offspring of sin and death. Next is Mitchell, and Mitchell was an angel, और Gabriel है वो the archangel of दुनिया के, ये वो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और Uriel was the angel of heaven and he was the angel who was guard, यानी कि वो guard थे angel जो के यानी दरबान जो होता है ना वो Uriel है. And Raphael was another angel in heaven that was sent by God. तो वो समझाने गए, वो एंजल जो है राफेल, वो समझाने गया था एडम एंड ईव को, और काफी उसने सारी डिटेल हिस्ट्री सब कुछ बताया कि ये करना है ये नहीं करना, अबाउट द क्रिएशन ऑफ मैन, सब कुछ. और उसने ये भी गाइड किया कि जो फॉरबिडन फ्रूट है वो नहीं खाना. बेल्ज़ेबब इज द राइट हैंड ऑफ सैटन. नेक्स्ट एक और डेविल है ये, और यूरेनिया इज द म्यूज जिसको स्टार्ट में रेफर किया जाता है. एंड दैट्स ऑल.